अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली मैंने चैट बंद रखी हुई है क्योंकि मैंने क्लास में काफ़ी जब फिजिकली मैं क्लास में आया था आई टोल्ड यू कि मैं चैट बंद रखूंगा। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि आप लोग जो है बगैर पेशेंस के मैसेजेस करते रहेंगे विच इज़ गोइंग टू बी अ ट्रबल। तो इस वजह से आई हैव क्लोज द चैट। ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताता रहूंगा यहाँ पे। ठीक है। आप उन चीजों को फॉलो करते रहेंगे। अल्लाह पाक का नाम लेते हैं एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छा काम करने की कोशिश में हूं मैं। एंड दैट कोशिश है इसके पूरा साल बहुत मेहनत करके बराबर छुट्टियां की है। पूरा टाइम पे सिलेबस खत्म करवाने की भी कोशिश की है। और अल्लाह ने चाहा तो ये आगे भी चलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लासेस के हम क्योंकि मॉक्स भी हो चुके हैं एग्जाम्स करीब है तो कंटेंट हमें याद है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कंटेंट हमें याद है। हमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है जो कि नॉर्मली आपको खुद करनी चाहिए थी एज अ स्टूडेंट। यू शुड हैव डन दैट। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं होते हैं, इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली आप गिवन सर्कमस्टांसेस में ना आप तैयारी कर पाए, ना आप पास पेपर्स कर पाए, एंड मॉक्स भी सर पे आ गया और कैमरे भी सर पे आ गया। अंदर रूटीन वैसे ही सबकी आउट होती है तो अब रमजान भी आ गया। तो इवेंचुअली आई हैव टू स्टेप अप। एंड क्योंकि मुझे स्टेप अप करना पड़ा है तो आई हैव डिसाइडेड कि हम पास बस करेंगे। ये अनप्लान्ड क्लासेस है नंबर वन। ये प्लान नहीं है। नंबर टू, इसके अंदर जो मेरी नीयत है वो पास बस करवाने की है। नंबर थर्ड, मैं वो पास बस कराऊंगा जो कि मैंने नॉर्मल क्लासेस पे नहीं करवाई या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग करेंगे जो कि आप लोगों ने नहीं करे। कुछ सवाल हो सकता है कि रिपीटेड हो और कुछ सवाल हो सकता है रिपीटेड ना हो। सही है। लर्निंग एट एनी कॉस्ट हर सूरत में ही होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। लर्निंग हर दफा ही होती है, हर चीज में ही होती है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास आउटसाइडर्स भी हैं और आस्ते आस्ते लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं अभी हमें। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आपने वर्कबुक पास पेपर बुक वन खोलनी है और पास पेपर बुक वन खोल के आपने जो है पेज नंबर 40 पे आना है। पेज 40। ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है या जिनके पास वर्कबुक नहीं है, लाखों दफा कहा होगा क्लास में वर्कबुक होनी चाहिए, वर्कबुक होनी चाहिए। बट यू पीपल थिंक कि आप लोग बेटर जानते हैं मुझसे। तो जिनके पास वर्कबुक नहीं है, ओपन अप अ नोटबुक एंड उस नोटबुक के सामने आप आंसर और क्वेश्चन कॉपी करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह was a main factor contributing to the spread of Islam between 1700 and 1850. How far do you agree with this statement? Explain your answer. तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि जब भी स्कॉलर्स के ऊपर सवाल आता है, जब भी स्कॉलर्स के ऊपर सवाल आता है, आपने सारे स्कॉलर्स के बारे में लिखना है। द पर्पस ऑफ पास्ट पेपर इज कि आप गिवन टाइम में आंसर सही लिख पाए। सो जब भी पास्ट पेपर्स के ऊपर सवाल आते हैं ना, पहले अपने आंसर को प्लान करना है कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। Planning is very important. The work of Shah Waliullah was the main factor contributing to the spread of Islam, between 1700 and 1850. Do you agree? How far do you agree with the statement? Explain your answer. तो इसके अंदर आपको शाह वलीउल्लाह भी लिखना होगा, इसमें आपको हाजी शरीयतुल्लाह भी लिखना होगा और इसमें आपको सैयद अहमद शहीद बरेलवी भी लिखना होगा। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने आंसर वहीं से स्टार्ट करना है जहां से क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है शाह वलीउल्लाह। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है शाह वलीउल्लाह। तो यू हैव टू टॉक अबाउट शाह वलीउल्लाह फर्स्ट। शाह वलीउल्लाह के मेजर मार्क्स है, बरेलवी के और हाजी शरीयतुल्लाह के ना कम कम मार्क्स होंगे। ठीक है। अल्लाह रहीम एंड करीम, साथ साथ चलिएगा, टाइम नहीं है इतना।
कि आई कैन वेट फॉर एनीवन। ठीक है, बिस्मिल्लाह, शुरू हो जाते हैं। फ्रॉम 17 टू 18 सेंचुरी, फ्रॉम 17 टू 18th century, three Muslims, three Muslim scholars tried to revive Islam. Three Muslim scholars tried to revive Islam. Full stop. They were successful in doing so. They were successful in doing so. The scholars were the scholars were Shah Waliullah, Sayyid, Ahmad, Shahid, Barelvi, and Haji Shariatullah, and हाजी शरीयतुल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह थे, सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, एंड नंबर थर्ड कौन थे? एंड नंबर थर्ड थे हाजी शरीयतुल्लाह। इंट्रोडक्शन के नॉर्मली मार्क्स नहीं होते हैं, बट अ नाइस इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज अ गुड इंडिकेशन कि आपका आंसर कितना अच्छा है। खूबसूरती जो है ना, मार्क्स तो नहीं देती है, लेकिन खूबसूरती अट्रैक्ट जरूर करती है। किसको अट्रैक्ट करती है? एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले शाह वलीउल्लाह के बारे में करेंगे। देखिए, शाह वलीउल्लाह वाज नोन एज कुतुबुद्दीन। शाह वलीउल्लाह वाज नोन एज कुतुबुद्दीन, full stop. He was born in Delhi. He was born in Delhi, full stop. He was a great influencer in reviving the Islam. He was the great influencer in reviving the Islam. शाह वलीउल्लाह, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप कोशिश करें आप ना यूज करें। शाह वलीउल्लाह revived Islam through his knowledge. Shah Waliullah revived Islam through his knowledge. Full stop. First of all, he translated the Holy Quran into Persian, which was the official language at that time, Impact, क्योंकि पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो अब लोग कुरान को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नाउ पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कुरान। नाउ पीपल विल बी able to understand the Quran, full stop. Later on, his sons translated Quran into Urdu, full stop. शाह वलीउल्लाह ने ऑल टुगेदर 51 बुक्स लिखी थी। He altogether wrote 51 books, in which two were famous, such as Hujjatul Baliga
and Izalatul Akfa. हुज्जतुल बालिगा एंड इजालतुल अकफा. सवाल, इस किताब में इसने ऐसा क्या करा? इस किताब में इसने कुरान और सुन्ना को समझाया. इन दिस बुक ही एक्सप्लेन्ड द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. तो इस बुक में इसने टीचिंग सिखाई थी. किसकी टीचिंग सिखाई थी भाई? कुरान और सुन्ना की टीचिंग सिखाई थी. इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. तो कुरान और सुन्ना की टीचिंग सिखाई थी इन्होंने. इन्होंने सुन्नी और शिया की राइवलरी को भी एंड करा था. ही ऑल्सो ended Sunni Shia rivalry by writing an account on first four caliphs. फुल स्टॉप. चार कैलिफ्स के ऊपर अकाउंट लिखा था क्योंकि हजरत अली के ऊपर ही सुन्नी और शिया के इख्तलाफात हैं. ही रोट एन अकाउंट ऑन फर्स्ट फोर कैलिफ्स. और एक बुक लिखी थी. उस बुक का नाम था खिलाफत उल खुलफा. द नेम ऑफ द बुक वाज The name of the book was Khilafat ul Khulafa. The name of the book was what? Khilafat ul Khulafa. सवाल सवाल और सवाल. सर पर्पस क्या था? पर्पस था सेक्टेरियन डिफरेंसेस को खत्म करना. The purpose was to the purpose was to the purpose was to reduce the purpose was to reduce the sectarian differences. The purpose was to reduce the sectarian differences. सुन्नी और शिया के differences को reduce करना था. The purpose was to reduce the sectarian differences. Full stop. तो sectarian differences वगैरह को भी क्या करना था? sectarian differences वगैरह को भी जो है वो reduce करना था. The purpose was to reduce the sectarian differences. आगे चलते हैं. शाह वलीउल्लाह के पास पॉलिटिकल नॉलेज भी थी. शाह वलीउल्लाह had deep political insight. Shah Waliullah had deep political insight. Shah Waliullah had deep political insight. तो बहुत ही deep political insight थी. Shah Waliullah had deep political insight. Full stop. Marathas were the biggest enemy of the Mughals. Marathas were the biggest enemy of the Mughals. Marathas were the biggest enemy of the Mughals. Full stop. He defeated Marathas in the third battle of Panipat. He defeated Marathas in the third battle of Panipat. तो मराठास को डिफीट कर दिया. कब डिफीट कर दिया? इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. ही डिफीटेड मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. इन्होंने फार्मर्स और लेबर्स को बोला काम ज्यादा करें और खर्चा कम करें. ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड farmers and laborers to work more and spend less.
He also required farmers and workers to work more and spend less. He also requested farmers to work more and spend less. Full stop. Shah Waliullah was able to spread Islam. Shah Waliullah was able to spread Islam among the subcontinent. Among the subcontinent. तो शाह वलीला इस्लाम स्प्रेड कर पाए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर. दैट इज शाह वलीला. यहाँ पे मैं 7 या 8 मार्क्स सिक्योर करूंगा. आ जाते हैं नेक्स्ट स्कॉलर के ऊपर. दूसरे स्कॉलर के आते हैं हमारे पास सैयद अहमद शहीद बरेलवी. सिमिलरली another scholar was सैयद अहमद शहीद बरेली. मैं एस भी लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखेंगे. सिमिलरली अनदर स्कॉलर वाज सैयद अहमद शहीद बरेलवी. तो दूसरे स्कॉलर कौन थे हमारे? दूसरे स्कॉलर थे हमारे सैयद अहमद शहीद बरेलवी. सिमिलरली अनदर स्कॉलर वाज सैयद अहमद शहीद बरेलवी. फुल स्टॉप. He also tried to revive Islam with his actions. He also revived Islam with his actions. So उन्होंने भी इस्लाम को रिवाइव किया अपने एक्शन से. He also tried to revive Islam with his actions. इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी. उस मूवमेंट का नाम था जिहाद मूवमेंट. He started a movement. He started a movement. He started a movement which was known as Jihad movement. He started a movement which was known as Jihad movement. जिहाद का पर्पस था अल्लाह के रास्ते में लड़ना. लेकिन the purpose was to fight in the way of Allah. The purpose was to fight in the way of Allah. तो पर्पस क्या था? अल्लाह की राह में लड़ना. द पर्पस वॉज टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स. अगर कोई पीछे है तो 2 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट ओनली. द पर्पस वॉज टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह. द पर्पस वॉज टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह. जल्दी से करें प्लीज. आई स्वेयर इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, मुझे जीना आराम कर दिया मेरे लिए. द पर्पस वॉज टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह. चले आए थे. इन्होंने जिहाद स्टार्ट की थी पंजाब से. इन्होंने जिहाद स्टार्ट की थी कहां से? पंजाब से. लेकिन द जिहाद was started from Punjab. From Punjab. The jihad was started from Punjab. The jihad was started from Punjab. पंजाब का लीडर था रणजीत सिंह. पंजाब was under the leadership of Ranjit Singh. पंजाब वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजीत सिंह. रणजीत सिंह ने मुसलमानों को टफ टाइम दिया था. अजान को बैन किया था. बीएड पे टैक्स लगा दिया था. अजान वॉज बैंड and there was tax on beard. And there was tax on beard. अजान बैन हो गई थी और टैक्स पे बीएड पे क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था. अजान वाज बैन एंड देयर वाज टैक्स ऑन बीएड. तो बैटल्स हुई थी ओकारा और हजारा. ये दोनों बैटल मुस्लिम जीते थे. many battles were fought. Many battles were fought.
such as Okara and Hazara. Full stop. Muslims ये बैटल जीत गए थे. Muslims won those battles. Muslims won those battles. Full stop. Total army 80,000 हो गई थी. The total army was 80,000. The total army was 80,000. The total army was 80,000. Finally, in 1831, Battle of Balakot took place. Battle of Balakot took place. In this battle, SASB Sayyid Ahmad Shahid Barelvi and Shah Ismail lost their lives. Lost their lives. बरेलवी हो गया. अब हाजी शरीयतुल्लाह पे आ जाते हैं. हाजी शरीयतुल्लाह HSU लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखेंगे. मैं लिख रहा हूं HSU, आप नहीं करेंगे. आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, आपका एग्जाम है, मेरा नहीं है. हाजी शरीयतुल्लाह ऑल्सो revived Islam with his actions. इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी. उस मूवमेंट का नाम था फराइजी मूवमेंट. ही स्टार्टेड अ मूवमेंट. He started a movement known as Faraizi Movement. Known as Faraizi Movement. He started a movement known as Faraizi Movement. फराइजी मूवमेंट का पर्पस था फर्ज को फॉलो करना, लेकिन the purpose of this movement was to follow फर्ज. इन्होंने सिंगिंग और डांसिंग को बैन कर दिया था. इन्होंने पीर और मुरीद के टाइटल को रिप्लेस कर दिया था उस्ताद और शागिर्द से. लेकिन अपने पास सिंगिंग एंड डांसिंग वाज बैंड. सिंगिंग एंड डांसिंग वाज बैंड. सिंगिंग एंड डांसिंग वाज बैंड. फुल स्टॉप. सिंगिंग और डांसिंग क्या हो गई थी? बैन हो गई थी. सिंगिंग एंड डांसिंग वाज बैंड. फुल स्टॉप. पीर एंड मुरीद title was replaced by Ustad and Shagird. Was replaced by Ustad and Shagird. Full stop. इन्होंने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था दारुल हर्ब, लेकिन he declared India as Darul Harb. He declared India as दारुल हर्ब. तो इन्होंने इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया था? इन्होंने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया एज दारुल हर्ब. फुल स्टॉप. तो सारे स्कॉलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो थे वो कौन थे? शाह वलीउल्लाह. हाजी शरीयतुल्लाह की कंटेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट आई एम नो शॉर्ट ऑन लाइंस, तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूं. जो कि आपको नहीं करना है, आपने थोड़ी बहुत और बातें हाजी शरीयतुल्लाह के ऊपर लिखनी है. लिखिए अपने पास. According to the above answer, apologies, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग तंग कर रहे हैं. मैं जरा अपना नेट ही बंद करने का सोच रहा हूं मैं. According to the above answer, according to the above answer, the most important scholar was Shah Waliullah.
in reviving the Islam. The most important scholar was Shah Waliullah in reviving the Islam. आई होप आंसर लिख लिया होगा आप लोगों ने प्लीज. चले जी नेक्स्ट सवाल भी कर लेते हैं. नेक्स्ट सवाल आई हैव अ पॉसिबिलिटी कि मैंने क्लासेस में करवा दिया होगा. अगर मैंने करवा दिया है तो वेट फॉर 5 मिनट्स. अगर नहीं करवाया तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एज वेल. अक्टूबर नवंबर 2020. अच्छा, शाह वलीउल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. पिछले 4 पेपर से शाह वलीउल्लाह जो है ना वो आपके एग्जाम में नहीं आया फ्रॉम द लास्ट 4 पेपर्स. अक्टूबर नवंबर 23 में नहीं आया, मई जून 23 में नहीं आया, अक्टूबर नवंबर 22 में नहीं आया, मई जून 2022 में नहीं आया. तो शाह वलीउल्लाह हैज इंपॉर्टेंस. शाह वलीउल्लाह इज इंपॉर्टेंट. तो शाह वलीउल्लाह के ऊपर दो तरह के सवाल आते हैं. एक तीनों स्कॉलर का कंबाइन आता है, आंसर लिखवा दिया. और एक ये दो स्कॉलर का मिलके सवाल, एक सिंगल स्कॉलर का सवाल आता है, मैं वो भी करवा रहा हूँ. एक्सप्लेन व्हाई शाह वलीउल्लाह वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर for the Muslim community during the 18th century. तो शाह वलीउल्लाह कितने इंपॉर्टेंट स्कॉलर क्यों थे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 18th सेंचुरी में? तो शाह वलीउल्लाह इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि शाह वलीउल्लाह की अचीवमेंट्स ऐसी थी. शाह वलीउल्लाह क्या थी? अचीवमेंट्स ऐसी थी इस वजह से. आ जाए जरा देख लेते हैं. आंसर लिखना स्टार्ट करें. शाह वलीउल्लाह was an important Islamic scholar. Shah Waliullah Shah Waliullah was the most important Islamic scholar. Shah Waliullah was the most important Islamic scholar, full stop. He tried to revive Islam through his knowledge. He tried to revive Islam through his knowledge. He tried to revive Islam through his knowledge. He tried to revive Islam through his knowledge, full stop. He altogether gave many services. He altogether gave many services. He altogether gave many services. ये 3 services लिख दें. He altogether gave 3 services. He altogether gave many services या 3 services. Full stop. लिखिए अपने पास, आगे चलते. लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शाह वलीउल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल शाह वलीउल्लाह. First of all, Shah Waliullah translated Holy Quran into Persian, translated Holy Quran into Persian, full stop. He also wrote books on fair and justice. He also wrote a book on fair and justice. He also wrote a book on fair and justice, full stop. लेकिन he also wrote a book on 4 imams. He also wrote a book on 4 imams.
known as Al-Insaf, known as Al-Insaf, known as Al-Insaf, full stop. In order to end Sunni Shia rivalry, in order to end Sunni Shia rivalry, in order to end Sunni Shia rivalry, Shah Waliullah wrote a book known as Shah Waliullah wrote a book known as Khilafat ul Khulafa. Shah Waliullah wrote a book known as Khilafat ul Khulafa. Shah Waliullah wrote a book known as Khilafat ul Khulafa. Full stop. He altogether wrote 51 books. He altogether wrote 51 books. He altogether wrote 51 books. Among them, the famous were, among them, the famous were Hujjatul Baliga and Izalatul Akfa. Hujjatul Baliga and Izalatul Akfa. Among them, the famous were the famous books were known as Hujjatul Baliga and Izalatul Akfa. Full stop. Paragraph change. Like Shah Waliullah. Secondly, Shah Waliullah also gave. Secondly, Shah Waliullah also gave political services. Secondly, Shah Waliullah also gave political services. Shah Waliullah also gave political services. Full stop. He invited Najibullah. He invited Najibullah, Shuja'ud-Dawla, Shuja'ud-Dawla, and Ahmad Shah Abdali. He invited Najibullah, Shuja'ud-Dawla, and Ahmad Shah Abdali. Full stop. इन्होंने मराठास को डिफीट कर दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. लिखिए अपने पास. They defeated Marathas in the third battle of Panipat. They defeated Marathas in the third battle of Panipat. They defeated Marathas in the third battle of Panipat in order to save Delhi. In order to save Delhi. In order to save Delhi. Full stop. Like Shah Waliullah also gave economic services. Shah Waliullah also gave economic services. Shah Waliullah also gave economic services. Full stop. Like he requested workers to work more. He requested workers to work more
and spend less. He requested workers to work more and spend less. He requested workers to work more and spend less. Full stop. He also said that laborers and farmers. He also said that laborers and farmers should be properly rewarded. He also said that laborers and farmers should be properly rewarded. He also said that laborers and farmers should be properly rewarded. He also said that laborers and farmers should be properly rewarded. He also said that laborers and farmers should be properly rewarded. He also said that laborers and farmers should be properly rewarded. That is why Shah Waliullah was an important figure. That is why Shah Waliullah was an important figure. That is why Shah Waliullah was an important figure. Full stop. I hope सब साथ हैं. I cannot open the chat unfortunately. मैं chat नहीं open कर रहा हूँ तो students have made my life a nightmare. कितने clear instructions दिए थे कि you have to register पहले. मुझे मैसेज नहीं करना है, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा. इतने लाउड एंड क्लियर हर क्लास में इंस्ट्रक्शंस जाके दिए, फिर भी लकीर के फकीर गधे के गधे ही रहेंगे. मतलब है ना, अक्ल नहीं आई इन लोगों को. मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे मैसेज कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग आई एम गोइंग टू रिप्लाई देम. स्टूपिड पीपल. क्या समझ नहीं आती यार. चले जी, नेक्स्ट आते हैं. एक सवाल आया था, वो जरा लोगों के लिए ट्रबल मेकर था. जरा सवाल को भी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला. एक सेकंड, मुझे ढूंढना भी पड़ेगा. हाँ जी, यहाँ पे आ जाए प्लीज. अपॉलॉजीज. चले आ जाए. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन द लाइव्स ऑफ द इंडियन पीपल. क्या इम्पैक्ट होगा रेलवेज का ऑन द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल? इसका आंसर जो है ना, आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे. इसका आंसर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे? आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कि लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया था रेलवे के ऊपर. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन द लाइफ of the Indian people in the 19th century.
तो लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया था? देखिए, रेलवे बनाने की वजह से ना इंडियंस को बोला जा रहा था घोड़े और गधे को छोड़कर ना आप रेलवे पे ट्रैवल करें। इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट ये है कि फास्टर ट्रैवलिंग होगी, रॉ मटेरियल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, ब्रिटिश जो है वो इंडिया को कंट्रोल कर पाएगा, इंडिया में ट्रैवल कर पाएगा, ब्रिटिश जो है वो है ना इंडिया की वेल्थ को लूट सकेंगे। इंडियन पे इम्पैक्ट क्या आएगा कि दे मॉडर्नाइज हो जाएगा। मॉडर्नाइज के अलावा अगर आप देखें तो इंडियंस का एक और फायदा ये हो जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह फास्टर जा पाएंगे। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सोच समझ के प्लान आंसर लिखना होगा। आई एम प्लानिंग एन आंसर, आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, ठीक है? आ जाए, शुरू हो जाए। पेज नंबर 49 है ये, नंबर 1। कंपलसरी सवाल है ये, 2020 का सवाल है। द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। आज हम लेकिन रेलवेज आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी which was built to make the life of people easy, full stop. लेकिन it has transformed the transportation system of India. It has transformed the transportation system of India. It has transformed the transportation system of India. Full stop. लेकिन railways were introduced as they were faster ways of traveling, as they were faster ways of traveling. Full stop. Raw materials can be transported. Raw materials can be transported to different parts of country, to different parts of country. Full stop. लिखिए अपने पास, overall imports and exports were done easily. Overall, the imports and exports can be done easily. Full stop. Now, the goods can be sold throughout India. ब्रिटिश की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई थी, लेकिन द ब्रिटिश profitability has also increased. The British profitability has also increased. Full stop. Railways were able to carry soldiers from one place to another, from one place to another easily. Full stop. Now, the British could travel the country faster. Full stop. They were able to spread their culture,
They were able to spread their culture. They were able to spread their culture as well as traditions. They were able to spread their culture as well as traditions. They were able to spread their culture as well as traditions. Full stop. Moreover, in times of famine and droughts, food can be delivered from one city to another. People can be relocated from one place to another. People can be relocated from one place to another. Full stop. Impact negative भी हो सकता है, but there were disadvantages as well, such as railways created a lot of noises, such as railway created a lot of noises, such as railway created a lot of noises. Smokes were also creating air pollution. Full stop. Many accidents also happened. Many accidents also happened in which resources were wasted. In which the resources were wasted. Full stop. In which resources were wasted. अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, रेस करना, तो मैंने रिकॉर्डिंग ओपन कर दी है, तो ये वीडियो चली जाएगी उस रिकॉर्डिंग के बदला। तो जो बाद में रिकॉर्डिंग सीखेंगे तो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करना भूल गया था, माय मिस्टेक। मैं इतनी चीज हो गई इस साथ डील करते करते, तो ये इशू हो गया था। कौन हरी कॉपी कर लें प्लीज, गिविंग यू 2 minutes। यू गाइस डोंट नीड टू रेज योर हैंड, मैं नहीं आंसर दे रहा, आप लोग अपना हैंड रेज करेंगे या कुछ करेंगे, मैं आपको नहीं जवाब दे पाऊंगा। द आंसर इज कि मैंने पहले ही कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ चैट क्लोज क्लास। अगर आप कोई हैंड रेज करेगा तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसको एक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस समझ के इसको क्लास से रिमूव कर दूंगा। तो नो नीड टू क्रिएट डिस्टर्बेंस प्लीज, ठीक है। आपने सीधे सीधे आंसर्स कॉपी करने हैं। आई एम नॉट सीइंग कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन दी आंसर्स। क्लास के बाद जो था आप उससे पूछ सकते हैं। डन हो गया, सही है। मैं ये गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अच्छा, साइमल्टेनियसली आई एम कमिंग रिकॉर्डिंग दिस इन माय सेल फोन एज वेल ना, तो वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा क्लास से प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो आई विल डू दैट एज वेल। चलो जी आगे चलते हैं। ये एक सवाल था, एक जिजिया टैक्स के ऊपर सवाल था, वो लोगों को ट्रबल कर रहा था।
मैं जरा वो जजिया टैक्स का भी एक सवाल करवा दूं। अच्छा, एक और चीज, देर इज नो प्रॉपर फॉर्मेट। हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो तो प्रॉपर फॉर्मेट है, कितना पढ़ेंगे वो नहीं है प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा, एक और, ये पेज नंबर 32 पे सवाल आ गया था, व्हाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 2017 का सवाल है, तो ये रिपीटेड सवाल है कि ब्रिटिश ने रेलवेज क्यों बिल्ड करा था। तो वी आर डन विद दिस आंसर, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, ना मुझे करवाने की जरूरत है, ठीक है। पेज नंबर 32 पे 2017 P1 क्वेश्चन नंबर 1C। यू हैव टू बी फास्ट विथ मी, लाइक यू हैव टू बी लाइक मी। सामने मेंटोर रोल मॉडल बैठा हुआ है आपके। यस, ये रहा। अक्टूबर नवंबर 2021 का सवाल है ये। व्हाई डिड द हिंदू कम्युनिटी अपोज जजिया टैक्स। आ जाए भाई, इस पे आ जाए। हिंदू कम्युनिटी ने क्यों अपोज किया था जजिया टैक्स को। व्हाई डिड द हिंदू कम्युनिटी अपोज जजिया टैक्स। आए जरा इस पे आ जाए, पेज नंबर 17 पे आ जाए। अच्छा, जिजिया टैक्स क्या था। जिजिया टैक्स एक टैक्स था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। जिजिया टैक्स एक टैक्स था किसके ऊपर था, नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स था। प्रोटेक्शन मनी था। इफ यू वांट टू स्टे अलाइव, इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया, इफ यू वांट टू लिव फ्रीली इन इंडिया, यू हैव टू पे अ टैक्स, एंड दिस टैक्स वाज नोन एज जिजिया टैक्स। सबसे पहले इस टैक्स को लगाया था अकबर ने। सबसे पहले इस टैक्स को लगाया था, किससे लगाया था, अकबर ने लगाया था। लेकिन बाद में अकबर ने इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया था। बाद में अकबर ने इस टैक्स को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। और अकबर ने एक दीन बनाया था, उसका नाम था दीन इलाही। अकबर कहता था यार, सबको एक साथ रखना है, सबको एक साथ जिंदगी गुजारनी है। तो सबको एक साथ जब जिंदगी गुजारनी है तो ना सबके मजहबों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब वॉज अ प्योरली 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 एक मुस्लिम स्कॉलर था, मुस्लिम लीडर था। औरंगजेब ने कहा हिंदूज की मैं नहीं परवाह करूंगा। औरंगजेब ने कहा कि भाई जिजिया टैक्स होगा, और नॉन मुस्लिम इस बात से ऑफेंड हो गए थे। हिंदूज ने क्यों ऑफेंड किया था जिजिया टैक्स। नंबर वन, मुस्लिम इस टैक्स को ना लैविश लाइफ के ऊपर खर्च कर रहे थे, वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। अय्याशियों पे खर्च कर रहे थे, अल्कोहल में कर रहे थे, गैम्बलिंग में कर रहे थे, फीमेल्स में कर रहे थे। दूसरा, ये टैक्स सिर्फ मुस्लिम के ऊपर नहीं था, हिंदूज के ऊपर था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि व्हाई ओनली हिंदूज एंड नॉट ऑन मुस्लिम्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो चुका था कि हिंदूज के ऊपर ये टैक्स था और मुस्लिम के ऊपर ये टैक्स नहीं था। तीसरा, इस टैक्स से ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। कोई प्रॉपर है ना, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के साथ साथ जो है, अल्लाह भला करे, यूके से मुल्क को फायदा नहीं हो रहा था, इंडिया को फायदा नहीं हो रहा था। तो देयर वर सो मेनी रीजंस। अब इसका आंसर फॉर्म करते हैं, आपके साथ बैठ के फॉर्म करूंगा। लाइक ए सेट, अनप्लैंड आया हूं मैं। अनप्लैंड देखिए, होलिया भी अनप्लैंड है, बियर्ड भी अजीब सी हुई भी है, बाल भी अजीब से ही हो रहे हैं, तो इट्स एन अनप्लैंड टास्क। आज जरा सा इसको आंसर लेते हैं। पेज नंबर 17। मैं स्टार्ट करूंगा जिजिया टैक्स से माहौल बनाने के लिए। जिजिया टैक्स, जिजिया टैक्स was a tax on the non-Muslims, full stop. It was a sort of, it was a sort of protection money. It was a sort of protection money, full stop. It was a sort of protection money, full stop. It was imposed by Aurangzeb on the Hindus, full stop. Hindu community objected to jizya tax for many reasons. Hindu community objected to jizya tax for many reasons. Full stop. लेकिन first of all, this tax was only on Hindus and not on the Muslims. This tax was only on the Hindus and not on the
Muslims. Full stop. Since the treatment of Hindus was different than Muslims, so they got offended. So they got offended. Full stop. Protests and riots. Protest and riots was started. Protest and riots was started. Full stop. Aurangzeb remained firm and he did not change his decision. Aurangzeb remained firm and he did not change his decision. Full stop. Aurangzeb remained firm and he did not change his decision. Full stop. Secondly, Jizya tax was giving more support and power to the Mughal army, was giving more support and power to the Mughal army. Full stop. They were spending money on alcohol, comma, gambling, and women. Full stop. No money was spent on the development which offended the Hindus, which offended the Hindus. Full stop. Thirdly, thirdly, Hindus who offered services for Mughal army were exempted from the tax, were exempted from the tax. Full stop. So Hindus thought it is a way to imba- it is a way to spread Islam. It is a way to spread Islam. Full stop. At times, jizya used to exceed zakat as well. So Hindus started opposing this tax. So Hindus started opposing this tax. Full stop. Copy करें please. या अल्लाह मैसेजेस का मैं क्या करूं.
मैं यही सोच रहा हूँ यार, थैंक यू फॉर द कंसर्न। मैं अपना सेल फोन में सोच रहा हूँ एयरप्लेन मोड पे डाल दूं, लेकिन है तो अपने ही बच्चे ना, क्या ख्याल है तो अपने ही बच्चे, उनका सोचना तो चाहिए ना। क्या नहीं, कॉपी शॉपी कर ली है, आगे चलते हैं। मुगल एम्पायर नहीं, मुगल एम्पायर इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ जाते हैं। यस, ये अच्छा सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी। आए जरा पे, मई जून 2020, पेज 25। मई जून 2020 पेज नंबर 25 पे आ जाए। मई जून 2020 पेज नंबर 25। सी पार्ट। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ना, जिनके साथ मैंने गेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर ली है, तो हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है, अल्लाह भला करे, वो भी चार पेपर से नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सवाल एक्सपेक्टेड है, एंड आई थिंक ये सी पार्ट वाला ही सवाल मिलता जुलता आएगा। Explain why East India Company was interested in the subcontinent in the years before 1750। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्यों इंटरेस्टेड है इन द इयर्स, इन द सब कॉन्टिनेंट इन द इयर्स बिफोर 1750? तो आज ये जरा देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, और उसको रन कौन कर रहे थे, प्राइवेट मर्चेंट्स। आज ईस्ट इंडिया कंपनी was a trading company, was a trading company। बेटा हमने सारे सवाल करने हैं, मैंने 15-18 क्लासेस रखी है, हम सारे सवाल करेंगे। 15-18 क्लासेस कोई बेंच मार्क नहीं है, महीना पढ़ा लेंगे भाई, एग्जाम के एंड तक पढ़ा लेंगे, मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लें। अभी जो फिलहाल पढ़ रहे हैं ना, उस पर तो फोकस करें। द व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, उसके ऊपर फोकस करें। ऑब्जेक्टिव इज जो गिवन टाइम है उसको वसूल करें। सही है। बहुत सारे बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, 600-700 बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं हमारी क्लास के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे रोकेंगे आज की क्लास के अंदर। थोड़ा सा इन सब बच्चों को अक्ल देंगे, जलील करेंगे, मैसेजेस पे जाके सुनाएंगे। इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, वो फॉलो नहीं कर रहे थे, गधे साले। चलो आंसर फोकस करो। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी विच वॉज run by private merchants, which was run by private merchants, full stop। They got permission, they got permission। और ये जो मुझे क्लास में रहते हुए व्हाट्सएप करे ना, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। दे गॉट परमिशन, खास तौर पे बॉयज को, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन। दे गॉट परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, फुल स्टॉप। आ जाते। ईआईसी क्यों इंडिया में आई थी? क्योंकि इनको ट्रेड करना था स्पाइसेस का। लेके अपने पास द फर्स्ट रीजन EIC was interested because they wanted to trade spices, masale, full stop। Its first destination was Indonesia. Then, then they came to India. Full stop. Then they came to India. They wanted raw materials such as silk, tea, and jute। They wanted raw materials such as silk, tea, and jute. Full stop. That is why they came to India. Secondly, India was rich in
gems such as gold, comma, ruby, comma, diamond and sapphire। और ब्रिटिश इंडिया का नाम क्या रखा था? गोल्डन स्पैरो। क्या नाम रखा था इंडिया का? गोल्डन स्पैरो। द ब्रिटिश कॉल्ड इंडिया as golden sparrow, which is why they came to India as they wanted to capture the wealth of India, as they wanted to capture the wealth of India. Full stop. As they wanted to capture the wealth of India. Full stop. करें ताकि मैं आगे जा सकूं। Thirdly, Mughal Empire was declining. Many people wanted to capture India. Many people wanted to capture India. Full stop. For example, Russians. Full stop. Before Russians can do that, British came to India and they made India as their colony. And they made India as their colony. Full stop. That's the end of this answer. अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लास रोकनी नहीं है यहाँ पे, बट मेनी स्टूडेंट्स आर अनएबल टू ज्वाइन। आज की क्लास उनके लिए एक लेसन होगी, ताकि अब वो है ना इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें। हम कल फिर से क्लास रखते हैं। हम 15 और 18 डेज को ना 25-30 डेज ले आते हैं, कोई मसला नहीं है। हम बढ़ा देते डेज को। हम क्लासेस को है ना दिन में 2 दफा कर लेते हैं, अब सारी की बात भी कर लेते हैं और रात को भी कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आई एम विलिंग टू डू इट, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कल मुलाकात करते हो, कल ज्योग्राफी को भी देखते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं पे रोक करते हैं हम, ठीक है ना। जाए, थैंक यू वेरी मच, फी अमान अल्लाह।